So today class will discuss about the Jenkins CI/CD tool. So first we'll understand what is Jenkins, right? What is CI/CD, right? Continuous integration of continuous delivery, continuous deployment कौन? तापरे आमे move करिवा complete details first theoretical किछि जानि दवा Jenkins उपरे then आमे move करिवा कोडिकी practical आडको right Jenkins केमती setup करिवा Jenkins केमती access करिवा. So basically first let's understand what is Jenkins. So what is Jenkins? Jenkins is a free open source automation server. What is it? Free open source automation server. What is this open source? Open source means it is free to use, freely available. Anyone can download and use it. And it is open source, is openly available for everyone to use and contribute. For everyone use and contribute. So it is a free tool. So we don't have to pay for that. So you can just download it and can use it for your work. So Jenkins is a free and open source automation server. So it has got a automation server which helps automating the parts of software development related to building, testing and deploying. So software related जो भी काम software development life cycle आमे जो बुझीबा right software development life cycle रे जहाँ भी सब phases আছে already मु बुझी सारी छी right केमती software development life cycle अछि तार सब phases तार प्रत्येक phases रे right तो आमे Jenkins use करि परिबा. तो mostly it is being used for building, testing and deploying the applications or delivering the application. So it facilitates continuous integration, continuous delivery, that is CI and CD. Continuous integration and continuous delivery. Okay. So so it facilitates continuous integration, continuous integration, continuous delivery, that is CI/CD. The short form they say it as CI and CD, right? So Jenkins is the most widely adopted solutions for CI and CD, and it is entirely built in Java programming. तो ये completely Java program रे ही बना है इचे. तो जो application जो tool है वो actually tool, right? वो application, वो web based application. Through web will connect to the server. This is actual application. Web based application माने हमको गोटे ब्राउजर दरकार है जो जहाँ द्वारा कि हमें कनेक्ट करिबा एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो एटा गोटे वेब एप्लीकेशन राइट वेब ब्राउजर द्वारा हमें कनेक्ट करि परिबा राइट. सो बिल्ट इन जावा प्रोग्राम तो जावा प्रोग्राम द्वारा एटा बिल्ट हेछि. सो व्हाट इज CI/CD? तो हमें जेनकिंस जानिले जेनकिंस ता कोन राइट. जेनकिंस इज अ फ्री and open source automation server. This mainly used for continuous integration and continuous delivery, right? So what is CI/CD? What is continuous integration and continuous delivery? So continuous integration and continuous delivery is a method of frequently delivering applications to the customers. So CI/CD is a method to frequently deliver apps to the customers by introducing automations into the stages of app development. जो app development stages रोची right तारा सबु stages रे automations ता हमें जो use करछे automations को include करी करी हमें कौन करिवा ना customer केमती continuously the product faster rate delivery करी पारि. The main concept attributes to CI/CD are continuous integration, continuous delivery and continuous deployment. So CI means continuous integration, CD comes for continuous delivery and continuous deployment. Okay. So if you see this particular diagram, continuous integrations. So under this continuous integrations, what's happening? We are doing building, testing and merging the applications. Building, testing and merging the applications. But continuous delivery, what happens? In continuous delivery, we are automatically release to the repository, automatically releasing to the repository, right? Continuous to the continuous delivery from the repository. When we say automatically release to the repository means it to the binary repository, not to the source repository, binary repo,
Okay, like our Nexus repo, JFrog repo, and all this. So continuous deployment works with automatically deploy to production. Automatically deploy to production. That is called continuous deployment. So continuous delivery और continuous deployment विषय हमको बहुत कुछ जानवा पड़े. Continuous delivery तुमको क्वेश्चन भी पचार पारे, what is the continuous delivery? In which stage you'll say that the continuous delivery and which one is the continuous deployment. The continuous delivery कौन होची ना, जोटी की तमे lower environment को deploy करिवो, lower environment रे deploy करिवो. Lower environment हला कौन, हमारा test server, staging server बा test server को हमें deploy करूचे, test server को हमें जदी deploy करूचे ताले एटा हिजो continuous delivery. Okay, test server. आ जदी production को हमें deploy करूचे, production को हमें जदी deploy करूचे, then it will be continuous deployment. Okay, so basic माने complete details हमें जदी जानिबा, what is continuous integration? So continuous integration is the practice of integrating all softwares, integrating all your codes and all your changes, right? All your codes and all your changes into the main branch of a shared code, main branch of a shared code repository yearly and often. So automatically testing each change when you commit, merge them, and automatically. तो आम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कौन करें, गोटे प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटिंग. तो आम जो कोड जो चेंजेस आम लिखुचे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कला बेले जो सोर्स कोड लिखुचे, राइट, ताकू मेन ब्रांच रे केमती शेयर्ड कोड रेपोजिटरी केमती ऑटोमेटिकली टेस्टिंग आ बिल्डिंग पई आम यूज करबा. तो सेटा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस रे रहउची, ऑटोमेटिकली केमती बिल्ड प्रोसेस ता किक करिवो, राइट, स्टार्ट हबो. With continuous integration, errors and security issues can be identified and fixed more easily and much earlier in the development process. The development process रे जो building आउ unit testing रो करा होची, right, testing करा होची, तो सेतरे कोन होची ना, आमे much yearly, बहुत yearly आमे कोन करिबा ना, easily software जो tool use करिबा Jenkins, ता द्वारा आमे issues identify करि परिया, bug identify करि परिया, आ ताको आमे development को पठि परिया. तो development वाला कोन हेबो, तो से पर्टिकुलर कोड उपरे आउ थरे काम करिवे, राइट. तो सेटा को हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशंस रे यूज करा. सो नेक्स्ट इफ यू सी हियर कम्स continuous delivery. The continuous delivery कोन, continuous delivery is a software development practice that works in conjunction with CI to automate the infrastructure provisioning and application release process. Once code has been tested and built as per the CI process, CD takes over during the final stages to ensure it's packaged with everything needs to be delivered to the environment, to any environment at any time. The continuous integration रे हमें कौन, continuous integration से हमें जानला हमर काम वाला कौन, build करिवो, unit test करिवो, build करिवो, right, test करिवो. तो build आउ test सरीला परे जो हमर फाइनल बिल्ड सरला परे कोन गोटे फाइनल प्रोडक्ट जे कोनसी एप्लीकेशन बिल्ड हबो, बिल्ड हला परे कोन करिवो, सो गोटे फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हबो. जेमति कि जावा एप्लीकेशन आमे जदी गोटे जावा एप्लीकेशन बिल्ड करिवा, राइट, जदी गोटे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कोन हबो, तार एक्सटेंशन हबो .jar फाइल. जदी गोटे वेब एप्लीकेशन सेटा कोन हबो .war फाइल, राइट. जावा वेब एप्लीकेशंस रो बिल्ड प्रोडक्ट हबो war file and desktop application रो jar file. तो सेही बरी .net रो er file, exe file, right. तो सब डिफरेंट लैंग्वेज रे हमें जे कोनसी कोड हमें लिखुची तारो डिफरेंट बाइनरी फाइल जनरेट हबो जोटा कि पैकेज्ड फाइल. तो सेटा कोड जनरेट हबो ड्यूरिंग द कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन बा हमरो बिल्ड स्टेज रे. in the build during the build stage it will generate the binary file, war file. ओके, तापर जनरेट हे सरला परे कोन हबो ना, कंटीन्यूअस डिलीवरी द्वारा एटा कोन हबो, डिलीवर हबो टू कोड की एनी एनवायरनमेंट को. हमें चाहिले लोअर एनवायरनमेंट करि परिबा बा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट करि परिबा. जदी लोअर एनवायरनमेंट कले कंटीन्यूअस डिलीवरी, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कले कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, राइट. टू एनी एनवायरनमेंट at any time we can deliver after the continuous integration is finished, right. The build result जोटा कि तुमको बे बुझैली var jar er etc, right, gets delivered to the lower environment for testing to an
artifactory or to an artifactory. Either we can deliver to an artifactory or we can send to a lower environment for further testing. That is called your continuous delivery. So what is continuous deployment? Continuous deployment enables organizations to deploy their applications automatically, eliminating to need for human interventions. तो डेप्लॉयमेंट रे आमे कोन होची जे कोनसी एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट हो कि डेटाबेस डेप्लॉयमेंट हो तो जे कोनसी डेप्लॉयमेंट टाइम रे आमे देखु तो मल्टीपल डेप्लॉयमेंट इंजीनियर्स कोन तन इन्वॉल्व होते जेंति ऑपरेशन टीम वाला प्रोडक्शन सपोर्ट गाइज विल बी देयर the release team will be there, right? Production release team thibe basically production support team kimba operations team semane release handle karanti, right? Operation team release team thibo je ki release handle karibe to release माने हमर जो प्रोडक्शन को रिलीज हो प्रोडक्शन रिलीज होवा पूर्व हमें कोन करिया प्राय मैक्सिमम टाइम रे मैक्सिमम एबे भी कौन होची ना हमर जे कोन से प्रोडक्शन सर्वर रहउची से प्रोडक्शन सर्वर को फर्स्ट आमे कोन करबा डाउन कला परे माने शटडाउन कला परे तापरे एप्लीकेशन डिप्लॉय करबा तापरे तार प्रोसेस अछि मैनुअली प्रोसेस जे भी नॉर्मल हमें जो नॉर्मल वे रे हमें करू बट कंटीन्यूअस डेवलपमेंट द्वारा कोन होची जदी हमें किसी टूल यूज करबा तो इजीली वी कैन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय द एप्लीकेशंस or product or softwares which will eliminate the human interventions. So human interventions is not required. जदि ह्यूमन इंटरवेनिशंस न रहिला तो कोन आमे एरर फ्री पाया माने बग हबार चांसेस बहुत कम राइट जेतु ऑटोमेटिकली सेम कोड आ टूल यूज हबो तो ऑब्वियसली एरर हबार चांसेस कमी जीवो राइट with continuous deployment DevOps teams set criteria for code releases ahead of time and when those criteria are met and validated the code is deployed into the production environment. This allows organizations to be more nimble and get new features into the hands for users faster. So obviously आमे जदी सबु जदी माने कोन continuous delivery continuous integrations delivery and continuous deployment is automation करि दबा तो सबु किछि will be taken care by the tools itself. तो Jenkins सबु किछि काम कर दबा हम पई तो हमको गोटे बिल्ड इंजीनियर दरकार नहीं तो बिल्ड इंजीनियर will be building and unit testing will be taken care by the tools itself, right? तो हमको गोटे रिलीज इंजीनियर भी दरकार नहीं हम रिलीज पार्ट टा भी कोन हला Jenkins रे हेई गला तो Jenkins will take care the release part. The release part आमे जति कहछि लोअर एनवायरनमेंट को रिलीज कले तो सेटा को हमें कोन कोनती कंटीन्यूअस डिलीवरी आ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को जति कले सेटा को हमें कोन कहबा तो कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, right? But Jenkins can be used for continuous deployment, but most of the companies they follow different tools like Ansible, Docker, Kubernetes for the deployment. We'll see those tools in later in our classes. Okay, so this allows organizations to be more nimble and get new features. तो आमे जदी बहुत जल्दी सब किछि बहुत जल्दी आ एरर फ्री रे आमे सब डेवलपमेंट करि दा बहुत जल्दी तो ऑब्वियसली यूजर पाखरे कोन आसीबो माने ऑर्गेनाइजेशन पाखरे कोन बहुत टाइम बंची जीवो राइट तो आमे कोन करबा ना अलगा किछि काम रे फोकस करि परिबा राइट. Now what is continuous testing? So continuous testing is a software testing practice where tests are continuously run in order to identify bugs as soon as they are introduced in the code base. The code base रे जत्ता बळे आमे गोटे लोअर एनवायरनमेंट को आमे साडीले टेस्ट करिया पई तो आमे कोन यूजर माने कोन टेस्ट केसेस सब लिखि दियो टेस्टिंग टीम वाला राइट सब टेस्ट केस लिखि दियो बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस तो सेटा टेस्ट एग्जीक्यूट होबो तो कंटीन्यूअस टेस्टिंग द्वारा कोन होछि ना software testing practice where tests continuously run in order to identify bugs as soon as they are introduced. So as soon as eta gote delivery hela lower environment immediately amaro continuous testing process ta trigger hobo to etire kon hobo na to code ame immediately test hey jibo right. In a CI/CD pipeline continuous testing is typically performed automatically with each code change triggering a series of tests to ensure that the application is still working as expected. तो जो कंटीन्यूअस टेस्टिंग टा होची कोन ना तो जते बळे हमें गोटे टेस्टिंग करबा जेबे तार सब टेस्ट केस फाइल को
ओके गोटे जेकोसी टूल गोटे यूज करिए जेमति कि टेस्टिंग पे सिलेनियम टूल यूज होउछि राइट तो सिलेनियम टूल आम सिलेनियम स्क्रिप्ट सब लिखिदबा तो सिलेनियम स्क्रिप्ट की तमर जे टेस्टर थिबे ऑटोमेशन टेस्टर राइट टेस्टिंग टीम ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम सो से माने कोन करबा ना स्क्रिप्ट तम पई ऑटोमेशन सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखिबे तो आमको कोन करे छै ना सेलेनियम स्क्रिप्ट ता केवल जेनकिंस द्वारा ट्रिगर करिवार अछि तो जेनकिंस द्वारा ट्रिगर हेले कोन ऑटोमेटिकली से स्क्रिप्ट सब रन हो जे तमे भाबनी जे मते ही सब जाक स्क्रिप्ट लिखिया पड़ियो ना राइट तो टेस्टिंग टीम रो डेवऑप्स टीम रो काम हैला तमे इंटीग्रेशंस करिवो अलगा टूल को आनी इंटीग्रेट करिवो जेनकिंस रे जोटा कि जेनकिंस द्वारा ट्रिगर हे पारि डाटाबेस काम जेकोसी तमे डाटाबेस करछो ता माने न जे तमको डाटाबेस सिखिबाकू पड़िवो ना डाटाबेस टीम तम कंपनी डाटाबेस टीम थिबे डाटाबेस टीम वाला से माने कोड लिखिबे डाटाबेस कोड जेकोसी कोड अछि तमको बस एग्जीक्यूट करियार अछि सेटा जो डिप्लॉयमेंट डाटाबेस डिप्लॉयमेंट हुए सेटा केमिति होबो सेटा तमे कोड लिखियो आइदर ग्रुप लेख सेल स्क्रिप्ट लेख या पावर सेल स्क्रिप्ट लेख डिपेंड करछि तम डाटाबेस को एनवायरनमेंट रे अछि राइट से तापर सेटा तमर deployment eligible. Then what it says, this can help identify problems early in the development process and prevent them from becoming more difficult and costly to fix later. So obviously हमें तो continuous testing करछे continuous unit testing हो किबा continuous testing हो तो हम much faster during development phase और तापर immediately हमें किछि bug आसला पाइकरी ताको संगे संगे fix करिकरी पठै परिबा राइट जेहेतु कंटिन्यूअसली होछि तो कंटिन्यूअसली टेस्टिंग प्रोसेस रे हमें डिटेल्स से पाई परिबा राइट नेक्स्ट कम्स तो इस पर्टिकुलर जेनकिंस केमती वर्क होछि तो आउ गोटे इठी प्रोसेस अछि जोटा कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट परे राइट कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट जतले सरी गला तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट परे कोन होछि ना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आसुछि तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रे कोन होछि ना हमें किछि मॉनिटरिंग टूल यूज कराउनी तो सिस्टम रे हेल्थ चेक करिबा पई या फिर तमे एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करिया पई so that will be taken care by your operation team L1 team or other people will be there who will monitor those tools for any application suppose you are using some scheduling tools or suppose you are using some different tools like Dynatrace or Prometheus and all or for server monitoring health checks and everything right application monitoring and all so that tools will be monitored by the and work will be done by the operations team. So the operations team will keep monitoring continuously and that monitoring will be done by the tools. So we have to integrate the tool so that that particular server, particular applications, particular areas that will be monitored by the tool and the output and the result will be sent to the concerned team. The monitoring team or the support team or the operations team will be sitting, that mail will come to them. So they'll work on this. Okay. So if you see this particular Jenkins works like जो फ्लोट आमे बर्तन देखिबा जेनकिंस केमती काम करछि नॉर्मली डेवलपर कोन करबा ना तर कोड लिखिबो तार कोड जे कोन से एप्लीकेशन गोटे डेवलप करछि गोटे प्रोडक्ट डेवलप करछि गोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करछि कोन करबा डेवलपर कोड लिखला कोड लिखि सैला पर से कोन करबा ना जोटा हमर शेयर्ड रिपोजिटरी बा रिमोट रिपोजिटरी रे गिटहब रे बा जे कोन सी गिटहब बा बिटबकेट जो किछि भी जे जोटा यूज करछंती तो गिटहब रे कोन करला ना कोड को कमिट कर देला तो आसुना जतले इमीडिएटली कोड ता कमिट होउची गिटहब रे तो गिटहब रे हमें जोटा कि वेब हुक को जाए जोटा गिटहब रे केमते ऑटोमेटिकली ट्रिगर हबो सेटा हमें देखिबा ई जेनकिंस रे केमते सेटअप करा हबो तो कोन हबो ना डेवलपर जतले कोड पुश कर देला गिटहब को रिमोटली मु तुमको देखै छी केमते गिटहब को हमें रिमोट काम सरला पर केमते हमें कोड पुश कला पर इमीडिएटली गोटे ट्रिगर हबो कोन जॉब बिल्ड ट्रिगर हबो जो एप्लीकेशन हमें सेंड करते से एप्लीकेशन बिल्ड ट्रिगर हो बिल्ड हैला कोन जेनकिंस जोडा CI/CD हमें सेटअप करथिबा तो जेनकिंस कोन करियो प्रोसेस करिवो जदी किछि फेल हैला जदी एटी किछि फेल हैला कोन करिवो build fails the developer team will be notified the developer team will be notified so developer team कोन करिवो किछि build fail हैला immediately unit testing एटी करिवो right build fail हैला developer team what it will do they will just try to fix the problem what is the problem and how to fix they'll fix the problem and again they'll push the code again they will push the code
again what will be, it will be triggered automatically. Again it will do the building, unit testing and building. If it is find again error, it will send to developer. If it is everything okay, it is success, then it will deliver either to, based on your setup, either you want to deliver to the artifactory. What is the artifactory? Which holds the artifacts. Then what is the artifacts? What is the artifacts? The artifact is the binary result, the build result. Okay, ଯେମିତି କହିଲି artifacts कौन? Dot jar file, dot war file, dot er file, dot exe file. These are the binary files, and this is called artifacts. Okay, this is called artifacts, and these artifacts get stored under artifactory. Where it gets stored, it will be called as your artifactory. And this artifactory is nothing but your binary repository. So GitHub is the remote source repository, right? Remote source code repository. So all source code will be stored in GitHub, but in Artifactory will store the binary files. The binary files, the jar file, the war file, the er file, these files will be stored in the Artifactory. Okay, and once it is stored, from there we can take it by, you can use different tool, we can take it and deliver to the testing, or else directly from the Jenkins itself we can deliver to the staging environment or our testing environment. Okay, so it will be delivered. So this is called your continuous delivery. This entire cycle, right, in CI, whatever happens, if any failure or anything happens, see, it is continuous process. This is called your CI, and this, after that, this will be delivered to this continuous process is called it CD, continuous delivery, right? So this is how the flow works. तो आमे केमती कोन करिवा ना, सबु जक जहा भी स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स रे देखिबा, ठीक अछि? तो एटा बुझी पारलो तार फ्लोटा केमती कोन फ्लो जेनकिंस रे काम करछि, एटा जस्ट सिंपल बेसिक फ्लो देछि हमर तार अलग माने आ गोटे जस्ट जते आमे मूव करबा आगु को ता विषय में कंप्लीट डिटेल्स रे। सो तामे कोन करबा, जेनकिंस रो किछि टर्म्स अछि, से टर्म्स विषय रे जानिबा। तो जेनकिंस यूज करबा पूर्वरु तार जो टर्म्स सब अछि ता टर्म्स विषय रे सब टर्म्स एंड की टर्म्स, राइट, सेट की टर्म्स विषय रे हम किछि जानिबा, जेमति कि जॉब और प्रोजेक्ट का, these two terms used interchangeably, they all refer to runnable tasks that are controlled or monitored by Jenkins. These two terms used interchangeably, they all refer to a runnable task that are controlled or monitored by Jenkins. Okay, job or project. Executor is a separate stream of builds to be run on a node in parallel. A node can be one or more executors, can have one or more executors. तो executor कौन होची ना, गोटे सेपरेट बिल्ड स्ट्रीम जे कि तमरो एक्चुअल बिल्ड को, एक्चुअल प्रोजेक्ट को रन करिवो, राइट? तमे जदि गोटे जॉब आउ प्रोजेक्ट क्रिएट करि देले, सेटा जो एग्जीक्यूट होबो, कि एग्जीक्यूट करिवो, सेटा भी एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करिवो। तो एग्जीक्यूटर पाखरे आइदर वन और मोर देन 1 2 or 3 4 5, right, based on the setups you can executor. So जदि आमे वन एग्जीक्यूटर रखिया ता माने कोन, एग्जीक्यूटर केवल गोटे जॉब बिल्ड करि परिबो। जदि आमे पांचटा रखतिबा त गोटे एग्जीक्यूटर गोटे नोड कोन करिवो ना, पांचटा जॉब को बिल्ड करि परिबो। ए नोड कैन हैव वन और मोर एग्जीक्यूटर्स, गोटे किबा पांचटा एग्जीक्यूटर। ता विषय में पूरा डिटेल रे जानिबा जतले आमे जॉब क्रिएट करिबा, राइट, जतले जॉब क्रिएट करिबा आ जानिबा ता विषय रे, राइट। आ बिल्ड कोन, तो एग्जीक्यूट करिवो कोन, जॉब प्रोजेक्ट। ए बिल्ड इज ए रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जो प्रोजेक्ट आमे बिल्ड रन हबो, राइट, एग्जीक्यूट करिवो तार बिल्ड
रिजल्ट जोटा हम बिल्ड रे बिल्ड कन्वर्ट हम बिल्ड generate hub, right? The build is a result of one of the project, one Java project build. So plugin kon plugin hochi a plugin is a piece of software or program that extends the core functionality of the core Jenkins server. The plugin hochi gote छोटो piece of software किंबा प्रोग्राम माने तमे गोटे स्क्रिप्ट लिखि पारो गोटे प्रोग्राम लिखि पारिबो कोनसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तमे गोटे किछ छोटो प्रोग्राम लिखि दियो कि गोटे छोटो सॉफ्टवेयर ता बनैथिबो तो सेही छोटो सॉफ्टवेयर को सेही एगु आमे कोन करियो गोटे प्लगइन भाबरे ताके यूज करि परिबा राइट so that plugin can be used to increase the core functionality of the Jenkins server तो तुमको जहां Jenkins actually बिना plugin रे किछ करि परिबनी just the basic आउ जोटा नॉर्मल फीचर्स अछि सेतिकी रहयो तो तार प्लगइन द्वारा आमे कोन करबा ना प्लगइन ऐड करिकरी ताकू एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी तमे ऐड करि पारि तुमको जे कोनसी गोटे देनस दरकार धर गोटे फाइल को तमे कॉपी नेकरी कॉपी करियार अछि S3 को तो कोन करबा ना S3 रो गोटे प्लगइन आनियो बारी गोटे प्रोग्राम आनियो बारी तो तुमको अननेसेसरी कोड बेसी लिखिबा को पड़िबोनी से गोटे कोड खाली प्लगइन टानिबो से प्लगइन यूज कलो से प्लगइन द्वारा तमे कोन करबा S3 बकेट रे फाइल को स्टोर करि परिबो राइट ए सब डिटेल्स तमे करि परिबो तो सेटा हला प्लगइन खाली हम गोटे एग्जांपल देले एमती बहुत सारा प्लगइन अछि ओके मोर देन hundreds of plugins are there more than thousands of plugins are there so छोट छोट piece of software तमे आमे ताको यूज करि परिबा राइट सो इटा हला कंप्लीट जेनकिंस विषय जेनकिंस किछि न गोटे कोन होछि हट CI/CD गोटे ऑटोमेशन सर्वर ऑटोमेशन टूल जोथरे आमे CI/CD अचीव करि परिबा तो आर सब की टर्म्स रहउछि जेमति CI/CD अचीव करे CI कोन कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कोन कंटीन्यूअस डिलीवरी कोन आमे जानले कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग कोन जानले अब की फीचर्स तार जो की टर्म्स सब जो गुरा अछि तो जॉब कोन गोटे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर कोन गोटे बिल्ड गोटे कोन प्लगइन सब कोन ए सब विषय रे जानले राइट एति जानि सला पर आमे कोन करिया ना एबे इंस्टॉलेशन सिखिबा जेनकिंस केमति इंस्टॉल करिबा तो बहुत इंपोर्टेंट गाइस फर्स्ट बेसिक किछि थियोरेटिकल तो जानिबा नै जेमति कि कहितली थियोरेटिकल आमे खाली अल्प किछि थियोरेटिकल जानिबा तापर बाकी सब आमे कोन करिबा यूज करिबा ओके बाकी सब आमे यूज करिबा नॉर्मली सब प्रैक्टिकल ठीक अछि लैब क्लास तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द इंस्टॉलेशंस तो आमे जेनकिंस ता केमति इंस्टॉल करियो ओके तो लेट्स गो लेट मी ओके सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी अछि ये जो प्रोसेस ता हमें यूज कर परिबा नले हमें कोन करिबा गोटे सर्वर क्रिएट करी से सर्वर रे हमें इंस्टॉल करिबा ठीक अछि तो लेट मी जस्ट लॉग इन टू द एप्लीकेशंस जस्ट लॉग इन करिबा एप्लीकेशन को ओके तो फर्स्ट कोन होछि jenkins.io jenkins.io जोटा केला जेनकिंस रो ऑफिशियल वेबसाइट ओके जेनकिंस रो ऑफिशियल वेबसाइट तो आमे एतरे कंप्लीट डिटेल्स जेनकिंस रो डॉक्यूमेंटेशंस विथ जेनकिंस केमति कोन लिखिबा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तुमको स्टेप बाय स्टेप बते देबी ता सहित बिफोर आमे डॉक्यूमेंटेशन पढिबा पूर्वरु आमे फर्स्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कर दो तापर आमे धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन सहित आमे सब कंप्लीट सेटअप करिबा तो एबे आउ किछि थियोरेटिकल नै थियोरेटिकली जस्ट 5% बळे थियोरेटिकल कली मजरे मजरे पढिबा ता सहित सब बळे प्रैक्टिकल पूरा टूल टा हमें सिखिबा केमिति जेनकिंस रा करबा ता पई हमकु टिके ऑटोमेशंस करबा पड़िबो ता पई सेति पई तो मु आगे तुमको सेल स्क्रिप्टिंग ता सारी देली जेतो हमकु टिके सेल स्क्रिप्ट भी लिखियो पड़िबो सेल स्क्रिप्टिंग ग्रुप स्क्रिप्ट सब लिखियो पड़े बते देबी बहुत इजीली हमें केमिति करि परिबा तो jenkins.io तांकर ऑफिशियल वेबसाइट तमे डाउनलोड पेज को जाओ डाउनलोड पेज रे देखो जेनकिंस को तमे जेमति कि जेनकिंस कोन गोटे जावा एप्लीकेशन तो जावा जेनकिंस गोटे जावा वेब एप्लीकेशंस जावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन तो जावा वेब एप्लीकेशन माने तार एंड प्रोडक्ट कोन हबो तार बिल्ड फाइल ता कोन बाइनरी फाइल ता .war फाइल सो jenkins.war फाइल ता को हमें कोन डाउनलोड करिवा डाउनलोड करिकरी तो .war फाइल जेतु एटा गोटे जावा एप्लीकेशन तो हमरो रिक्वायरमेंट कोन रहइबो जावा रहइबो बिना जावा रे एटा हम इंस्टॉल करले चलीबोनी राइट तो हमें कोन करबा जावा फर्स्ट इंस्टॉल करियो
राइट। तो तार डाउनलोड ऑप्शंस देछि तमे जदि विंडोज रे चाहूचो करिवा पय तो मु सबले सजेस्ट करबी तमे निज मशीन रे किछि भी टूल इंस्टॉल करनी गिट को छाड़ी केवल गिट जदि इंस्टॉल करछो वेरी इज ओके नो प्रॉब्लम इट्स वेरी स्मॉल एप्लीकेशंस यू कैन इंस्टॉल इट गिट बट गिट को छाड़ी आ किछि भी सॉफ्टवेयर तम सिस्टम रे लोड करनी बा इंस्टॉल करनी नले तम सिस्टम स्लो डाउन कर दबो राइट तापर तमे यूज भी किछि करि परिबनी राइट। तो ये सब एप्लीकेशंस जेतु माने जेनकिंस एते बड़ो हेवी यूज एप्लीकेशन तमे जदि भी इंस्टॉल करूछो इट्स ओके नो प्रॉब्लम इट विल वर्क बट आओ बाकी टूल सब अच्छी जमी डॉकर रहा आंसिबल रहा कुबरनेटिस सब स्लो कर दो मशीन को जदि तमे सब टूल इंस्टॉल करिवो राइट। तो मु ये सब तुमको बतेदेवी केमती हमें क्लाउड रे सर्वर क्रिएट करिवा आउ सर्वर क्रिएट करी क्लाउड रे हमें ये सब इंस्टॉलेशंस करिवा सब टूल राइट। तो एबे कौन करिवा हमें डाउनलोड करिवा जेनकिंस को केमती कौन जेनकिंस यूज करि परिवा तो जेनकिंस हम मल्टीपल वे रे हमें यूज करि परिवा राइट। तो एटी कौन डाउनलोड जेनकिंस 2.462 लेटेस्ट वर्जन्स राइट। एलटीएस मींस लॉन्ग टर्म सपोर्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स देखिबो तार दउची जेनेरिक सीओ देखो जेनेरिक जावा पैकेज डॉट वार फाइल तो आम जदि चाहूचे वार फाइल डाउनलोड करिया पई तो मो मशीन रे मु कोन करी वार फाइल टा क्लिक कली तो ऑटोमेटिकली कोन होना वार फाइल देखो वार फाइल टा डाउनलोड हो गला राइट जस्ट स्टार्टेड डाउनलोडिंग तो वार फाइल टा गोटे डाउनलोड होउची राइट। तो मु एबे कोन करबी ए जो वार फाइल टा डाउनलोड होउची डाउनलोड हो सारला परे मु जदि जीबी मोर डाउनलोड फाइल को तो वार फाइल टा को मदि इंस्टॉल करिया पई चाहूची मो मशीन रे विंडोज मशीन रे तो मु कोन करबी जाइकरी विंडोज मशीन्स रे इंस्टॉल कर पाली राइट। तो मु जदि डाउनलोड पेज को जीबी एठी तो डाउनलोड जेनकिंस डॉट वार सी जेनकिंस डॉट वार तो मैं डबल क्लिक कले एटा मते पचारिबो इंस्टॉलेशंस पाई नॉर्मल इंस्टॉलेशन सेमती कराबो सेमती इंस्टॉलेशंस करियो ता पूर्व तुमको जावा इंस्टॉल कर देतियो राइट। वार फाइल आइगला नाउ এটা নর্মাল ইনস্টলেশনস মানে এটা ডেস্কটপ আপ্লিকেশন নো এটা নর্মাল ইনস্টলেশনস করিবানি আমি তো ମୁଁ বতেদেবি কেমতি ইয়াকু রন করিব ওকে জাভা jenkins.war ফাইল তুমি কেমতি রন করিও প্লাস স্টেপস রে বতেদেবি উইন্ডোজ রে কেমতি জাভা एक्चुअली এটা যে war ফাইল রাইট তাকু আমি রন করিয়া পড়িব ইউজিং জাভা কমান্ড জাভা ইউজ করিকি তাকা আমি ডবল ক্লিক করিকি ইনস্টলেশন বিকজ ইট ইজ নট डेस्कटॉप एप्लिकेशन इट इज नॉट ए डेस्कटॉप एप्लिकेशन तो हमें इंस्टॉल करि परिबानी डेस्कटॉप रे ताको हमें यूज करबा कोन डबल क्लिक कले भी एटा तुमको इंस्टॉल हवा पाई दबोनी राइट तमे यूज करिवो जार फाइल तुमको बते देबी केमती तमे जेनकिन सर्वर को एटा गोटे वार फाइल जेतु तुमको गोटे सर्वर दरकार आइदर तुम टमकाट सर्वर रे पके टमकाट सर्वर रे जेनकिन्स रन करि परिबो जेनकिन्स मल्टीपल वे रे तमे रन करि परिबो जेतु गोटे एप्लीकेशन राइट त गोटे टमकाट सर्वर दरकार जे कोन सर्वर गोटे दरकार राइट तुमको बते देबी इजीली स्टेप बाय स्टेप डोंट वरी। डॉकर जदि यूज करिया चाहछो कुबरनेटिस रे यूज करिवो उबुंटू मशीन रे इंस्टॉल पाई देउची विंडोज ओपेनसोसी मैकओएस राइट सब डिटेल्स रे देइछ जा जा मशीन से मैक ओएस राइट जदि मैकबुक अछि तम पाके तम इंस्टॉल करि परिबो ओपेनसोसी FreeBSD राइट सब विंडोज रे केमती तमे इंस्टॉल करिवो विंडोज रे देखो Jenkins running Jenkins behind internet information IIS information behind nginx behind apache रे केमती रन करिवो पूरा कंप्लीट डिटेल्स रे बतै देछि राइट। तो आमे गोटे कोन करिवा ना आमे गोटे सर्वर क्रिएट करिवा कोठी Amazon वेब सर्विस यूज करिवा राइट मु गोल कोन करबी EC2 इंस्टेंस गोटे क्रिएट करबी तो मु जदि एबे देखिबी मो पाखे बहुत सारा EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट हे कि अछि अननेसेसरी जोटा कि दरकार नै तो लेट मी गो अहेड एंड टर्मिनेट दोस servers I don't need this already this ansible last class people I already have told them so this is already done so what I can do I can go ahead and just terminate those servers terminate okay good so both of the servers are now getting shutting down both of the servers are now getting shutting down right so let both of them terminate both ansible as well as docker installed here in this server and everything has now been terminated I have terminated everything तो एबे कोन करिवा हमें गोटे सर्वर अछि लेट इट बी देयर
तो मु कौन करुछि आ गोटे नुवा सर्वर क्रिएट करुछि ओके नुवा सर्वर क्रिएट करुछि तो सर्वर क्रिएशंस पई तमे कोन करिया फर्स्ट ऑलरेडी मु बुझे देछि राइट हम EC2 क्लास रे ऑलरेडी जानिचे तो मु क्विकली गोटे कोन करछि सर्वर क्रिएट कर दोछि हैला तो मु आना देली जेनकिंस खाली दे देली जेनकिंस तो मते गोटे इमेज फाइल चूज करियार अछि ऑपरेटिंग सिस्टम्स पई राइट मते गोटे इमेज फाइल चूज करियार अछि तो AMI चूज करियार अछि अमेज़न मशीन इमेज तो मु चूज कली अमेज़न लिनक्स तो तमे मैक ओएस जदि मशीन चाहो मैक ओएस नहीं परिबो उबुंटू मशीन चाहो उबुंटू विंडोज मशीन चाहो विंडोज मशीन रेड हैट चाहो रेड हैट सुसी सब पाई परिबो तो मु चाहो अमेज़न लिनक्स नवा पई तो अमेज़न लिनक्स आ लिनक्स 2 नेली अमेज़न लिनक्स 2 मशीन्स ओके तो तो एठे कोन करबा सलमर आर्किटेक्चर ऑटोमेटिकली 64 बिट से नहीं गला AMD प्रोसेसर AMI ID एटा AMI ID नाउ इंस्टेंस टाइप तो आम ये सॉफ्टवेयर चूज करदे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कले एबे हमें कौन करबा ना हार्डवेयर टाइप रा चूज करबा केते मेमोरी दरकार केते स्टोरेज दरकार केते CPU दरकार राइट तो मु T2 माइक्रो फ्री टियर वाला नेली कीपैड लेट्स प्रोसीड विथ द कीपैड तो कीपैड जे कोन से कीपैड गोटे मु नै जाउची सपोज एनसिबल डेमो B12 नेली कीपैड जोटा कि तुम पाखर अवेलेबल थिबो नले नुवा गोटे क्रिएट कर दबा ठीक अछि एला तापर सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप तो मो पाखे जो सिक्योरिटी ग्रुप अछि मु ताको सिलेक्ट कर दोछि राइट मेक श्योर दैट सिक्योरिटी ग्रुप यू नो हाउ टू क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप आ सिक्योरिटी ग्रुप कोन मु कंप्लीट डिटेल्स रे तुमको बहुत थर बुझेई भी देछि राइट सिक्योरिटी ग्रुप कोन गोटे सेट ऑफ फायरवॉल रूल्स जोतरे कि हमें केमिति गोटे सर्वर को एक्सेस करिबा बा एक्सेस दबा ता विषय रे सिक्योरिटी ग्रुप रे सब फायरवॉल एक्सेस तक सेट कराई था राइट तो सिक्योरिटी ग्रुप तो स्टोरेज एला जो ब्लॉक स्टोरेज बा बीबीएस स्टोरेज तमे जोटा कि तमरो बूटेबल डिवाइस ते स्टोरेज दबा को चाहू 8 GB तो मु नॉर्मल खाली इंस्टॉलेशंस पई 8 GB रो रखि छी सपोज ठीक अछि 8 GB रो रखि छी लेट इट बी देयर 8 GB ओके नाउ हम कोन कली इंस्टॉलेशंस का बट इट्स नॉट ओके इट विल स्लो डाउन योर मशीन्स तो ये तुमको मिनिमम 30 GB नबार अछि तो मोर ऑलरेडी गोटे 30 GB रो मशीन रन होउची तो जेतु मु आगुरु कहिछि जे अप टू 30 GB इट इज फ्री अप टू 30 GB इट इज फ्री तापर तुमको पैसा पड़िबो राइट तो मु कोन कली 8 GB रखि छी थाओ नेक्स्ट गो अहेड लॉन्च इंस्टेंस क्विकली गोटे इंस्टेंस लॉन्च कली तो इंस्टेंस लॉन्च हबा भितरे लेट गो अहेड एंड सर्च इट ओके लेट्स गो अहेड एंड सर्च इट तो मु कोन करबी सर्च करबी ठीक install Jenkins on Amazon Linux 2 okay Jenkins on AWS केमती इंस्टॉल करिवो राइट कंप्लीट दे देछि तो कोन पर्टिकुलर यूज करिवो केमती कोन तार कमांड सब एटा पूरा बतैछि केमती कोन तमे सर्वर क्रिएट करिवो जोटा कि हमें करि सारले राइट तो कनेक्ट कला परे ई सब देछि केमती कोन तमे SSH कनेक्ट करिवो राइट तो Jenkins यूज करिकरी राइट ता कोन Amazon 23 ना 2 नीच कोडा नीच एटा ओके फाइन तो हमें 2 नहीं जाई छे तो इट्स ओके एब्सोल्युटली फाइन नो इश्यूज तो हमें कोन करिया अच्छा तापे हमको जावा भी इंस्टॉल करियर अछि राइट जावा भी हमको इंस्टॉल करियर अछि तो एटा अछि Amazon Linux 23 आर जावा पैकेज ता 2 पाइन जावा पैकेज कान Amazon 2 पाइन जावा पैकेज ये देइनी बोते Amazon Java package downloading and installing Jenkins instance ओके तो हमें कोन करबा तो जेतु से 23 रो ही सब देखै छी तो हमें किछ नहीं हमें कोन करबा ना ओके फाइन हमको फर्स्ट Java installations करियर ओके फर्स्ट लेट्स गेट द सर्वर रेडी तापर हमें देखिबा ओके तो तमे चाहू छ जदी 2 रे न नै कि 23 न पे दैट्स वेल लेको 23 रे भी नहीं परियो 23 रे नहीं करी Amazon 2023 तादे भी तमे इंस्टॉल कर पाइयो राइट तो हमर सर्वर रन होची
तुम चाहूछ जदि 23 रे बेटर हम कारण तुम भी तो लेटेस्ट वर्जन लेकर करिवो 23 राइट so let me go ahead and create a 23 machines then go ahead launch instance and quickly Jenkins 23 mi by default okay t2 micro so let keep here quickly select कर दोचे ये बढ़े दवा 20 दे दवा मतलब 8 रे का स्लो हो कौन करियो 20 दे देली तो एडवांस लॉन्च इंस्टेंस बस ठीक है within 1 minute भितर गोटे machines में क्रिएट कर ला गोटे machines right तो ये machine टा terminate हो गला let's go ahead तो ये machine भी start हो गला 23 machine में automatically started सेते में Amazon Linux नली but it is quick right it is quick to boot up and start right तो जेहेतु एटा native to Amazon AWS तो obviously सब प्रकार support भी हमको मिल जाएगा right तो गोटे ये machine टा run हो गला running right so what I'm going to do now I'm going to get the public IP addresses okay get this public IP address तो हमको एटा connect करियर अछि right let's go ahead तो मु कोन करबी IP address मु पिन कर दोछु 172 एटी पुट कर दोछि तो मते किछि सेशन जीवर अछि connections SSH authentications credentials तो मते जो की टा मु देइतली सो की ना कोन थिला मे भी डाउनलोड्स रे थिबो right Ansible demo v12 right let's select it open institute type in user yes connected not sure why it did not work that time so let me just change something here change settings just font size टिके बढ़े दवा right appearance change let me make it to 16 okay apply good तो font ହେଇଗଲା तो ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 machines को Amazon Linux 2023 machines को कनेक्ट कर देली तो इमीडिएटली तमे कनेक्ट कला परे आको अपडेट करि दबो sudo yum update -yes तो किछि यदि रही एथिबो माने अपडेट हेइ नथिबो अपडेट हेइ जो तो इट नथिंग टू डू माने सब किछि अप टू डेट अछि राइट तो वर्तमान तांकर प्रोसेस हिसाब रे Jenkins रो डॉक्यूमेंटेशन हिसाब रे हमें फॉलो करिबा तो मु फर्स्ट अपडेट मारिली अपडेट नाही तापर कोन कहि ना ऐड द Jenkins repo using the following command तो एटा मु यूज करिकरी Jenkins रो रेपोटा ऐड करिवि फर्स्ट ठीक है कंट्रोल सी okay so 100% success Jenkins repo add हे गला Jenkins repo add हैला पर हमें तापर नेक्स्ट कोन करिया ना मते कोन अछि sudo यूज करो import key file from Jenkins CI तो CI रो import करिया अछि ए कमांड टा okay so it is imported now तापर कोन अछि import हे गला पर sudo yum upgrade तो सिस्टम को अपग्रेड करा राइट अपग्रेड हे गला नथिंग टू डू सब क्लीन अछि Jenkins टेबल टा केवल अपग्रेड हैला Jenkins टेबल वर्जन तो एटी सरला परे फर्स्ट हमें कोन करले ना रेपो को ऐड करिले रेपो ऐड परे गोटे की डाउनलोड करले जोटा इंस्टॉलेशंस की ता परे हमको डायरेक्ट इंस्टॉलेशंस करबा ता पे कोन इंस्टॉलेशंस कमांड sudo super user do okay with root privileges sudo yum install Jenkins -yes okay so yum install Jenkins तो हमें एबे Jenkins को इंस्टॉल करियो राइट एंटर so installation चल रहा है 20 70 30 40 50 now installing Jenkins what are latest versions 2.462 version Jenkins so installation से गला complete installed this version टा install हो गला okay Jenkins तो install हो गला but एबे बिना जावा रे चलीबनी तो हमें भी चेक करबा जावा वर्जन कोन अछि वदि जावा वर्जन हाइफन वर्जन मारबी तो जावा कमांड नॉट फाउंड ता माने जावा इंस्टॉल ही हेनी तापर एबे हमको जावाटा इंस्टॉल करिया पड़िबो ठीक अछि तो मु कोन कली ये करिकरी सिस्टम पे इंस्टॉल Jenkins तो इंस्टॉल कर देली इंस्टॉल कला पर स्टार्ट कर देली राइट तो Jenkins इंस्टॉल करिवा पूर्वरु एटी से देछि जावाटा भी इंस्टॉल करिया पई
बट मु जावा इंस्टॉलेशन टा भूली जाइए करिनी राइट मु कौन कली डायरेक्टली इंस्टॉल कर देली जेनकिंस इंस्टॉल तो कर देली तो मुझे जदि जावा स्टार्ट करी एबे जावा आउ स्टार्ट हबनी सॉरी जेनकिंस आउ स्टार्ट हबनी कारण जावा इटी ना इंस्टॉल हेनी तो बर्तमान मु कौन करछि जावा इंस्टॉल कर देबी राइट लेट्स गो आइट जावा कौन वर्जन इंस्टॉल होची जावा 17 इंस्टॉल हैला राइट जावा 17 इंस्टॉल हैला तो एबे मु जदि मारिबी जावा hyphen hyphen versions it will give me see java hyphen hyphen version तो जावा वर्जन देखेबो कोन देखेला 17 जावा 17 इंस्टॉल है तो अभी जावा इंस्टॉल है जेनकिंस भी हम इंस्टॉल कर देइछे तो आगे भी जेनकिंस इंस्टॉल करले किछु प्रॉब्लम नहीं तो आगे हम जेनकिंस इंस्टॉल कर देली तापर जावा इंस्टॉलेशन चला बर्तमान मु कोन करबी ना जेनकिंस को स्टार्ट करबी तमे एनेबल करूची से एनेबल माने तमे जदी सिस्टम बूट हैला तमे जदी एनेबल करिछ कोन ऑटोमेटिकली जेनकिंस कोन हबो स्टार्ट हे जिवो तो रिबूट कल तुमको आउथरे मैनुअली करबा को पड़िबनी तो तमे कोन करिवो enable Jenkins okay enable Jenkins तो enable हैला माने कोन जे गोटे सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर दोउची राइट तापर हमें कोन करबा ना स्टार्ट करिया Jenkins टा को स्टार्ट करिया राइट स्टार्ट Jenkins तो enable हे गेला पर एबे Jenkins हमें स्टार्ट करले कोन यूज करले कमांड sudo systemctl start Jenkins systemctl start Jenkins ओके ओके Jenkins एबे स्टार्ट हे गेला तो स्टेटस देखिबा Jenkins रन होची ना नाही तार स्टेटस पई हमें कमांड यूज करिया sudo systemctl बा system control status Jenkins ओके एटा एंटर एटी देखो एक्टिव आउ रनिंग सिस्टम कोन एक्टिव आउ रनिंग होची राइट तो वर्तमान जेनकिंस हमर इंस्टॉलेशन सही गला बहुत इजीली तो तमे कोन करबो एटा मु तुमको पिंग कर दोउची तो तमे हैंडी एटा रखी तो इजीली जेतो दरकार हबो तमे यूज करि परिबो राइट तो क्विकली पिंग कर दोउची एटी देन सेटा जस्ट सेव करी रखी था तमे आज राति रे इंस्टॉल करियो मते आज टास्क था तमे इंस्टॉलेशन कर देखो तो अबे जेनकिंस इंस्टॉल कर देले तब हमें जेनकिंस को एक्सेस केम करबा राइट तो एति की मन रखी था जेनकिंस रो डिफॉल्ट पोर्ट हैला 8080 जेनकिंस रो डिफॉल्ट पोर्ट हैला 8080 तो हमें 8080 पोर्ट रे कनेक्ट करबा तो केमती कनेक्ट करबा तो फर्स्ट सिस्टम को गले राइट एठी जीवा एठी हमें कोन सिस्टम हमर रन होउची तो हमें कोन करबा ना आईपी एड्रेस तार नबा आईपी एड्रेस जेनकिंस रो आईपी एड्रेस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस नबा राइट तो हमें एठी कोन करिया :8080 केम गली आईपी एड्रेस :8080 ए पोर्ट ता हमें असाइन करबा दबा राइट हेला इमीडिएटली देखो आसी गला जेनकिंस आ तमे 8080 मु देला माने एक्सेस कला मोर जदी 8080 जदी व्हाइट लिस्ट हेई नथिबो मन रख तमे जले फर्स्ट नुवा क्रिएट करछो मे बी तमरो कोन सिक्योरिटी ग्रुप रे 8080 व्हाइट लिस्ट हेई नथिबो तमे कोन करिवो ना तमर सही सर्वर को जाईकरी पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को सिक्योरिटी ग्रुप को जीवो सिक्योरिटी सेक्शन रे किंबा एपटे सिक्योरिटी ग्रुप को जाईकरी नेटवर्किंग या सिक्योरिटी ग्रुप को तमे जाई परिबो पा ए सिक्योरिटी ऑप्शंस ए जो पर्टिकुलर इंस्टेंस रो सिक्योरिटी ऑप्शंस को आसीबो एठी आसला पर तमे सिक्योरिटी ग्रुप पाइबो राइट ए जे एकेसवाई मु देइची एटा क्लिक कला पर कोन होची एठी हमकु मिल जो पूरा डिटेल्स रे केमती तमे इनबाउंड मु जो इनबाउंड ता अछि एडिट इनबाउंड करियो तमर जदी पोर्ट ऐड हे नथियो मोर एठी देखला पोर्ट मु 8080 ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट कर देइची तो सेति पई मते 8080 ओपन हे गला तो तम केस रे जदी एटा ओपन न होउची जेनकिंस तो मेक श्योर don't get confused okay you can come here directly to the security group edit inbound rule how edit कला पर तमे कस्टमर 8080 को ऐड कर दबो व्हाइट लिस्ट कर दबो व्हाइट लिस्ट हे गला परे ओके केमती करबो देखो मु बते दोची एडिट इनबाउंड जीवो तो तमे गोटे ऐड रूल कस्टम टीसीपी 80 दे दबो 8080 मु ऑलरेडी दे देची 8080 राइट मु ऑलरेडी 8080 दे देची एठी आ गोटे देले किछ लाभ नै तो 8080 तब 8080 दे सला परे तमे एटा कोन करबो ना पब्लिक आईपी दबो 000 एटा लागि पब्लिकली
accessible, right? दे सला पर तमरो हे गला तबे सेव कर दो, सेव पे कंप्लीट हे गला। तो मु कोन कले एठी जेनकिंस वर्तमान सर्वर एक्सेस कली। तो जेनकिंस फास्ट एतले हम एक्सेस करबे से कोन करछ ना हमकु गोटे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मागुची। तो आमर है एटा है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यही पाथ रे से देखे दो वेयर टू फाइंड द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो यही पर्टिकुलर फाइल रे हमर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड टा अछि। तो हम केंति पाइबा हमकु बैकएंड जीवा को पड़े सर्वर को, राइट? तो सर्वर को मु ऑलरेडी बैकएंड एटा है हमर बैकएंड सर्वर बैकएंड जेनकिंस रो एटा बैकएंड टा एटा है फ्रंट एंड, राइट? हमें वेब ब्राउजर रे जेनकिंस को एक्सेस करूचे वेब एप्लीकेशन। तो मु एटी कोन करना कैट परमिशन डिनाइड कोची। तो मु कोन करी सुडो यूज करबी कैट सुपर यूजर कैट। तो एटा हला तार पासवर्ड एडमिन पासवर्ड। तो हमको एडमिन पासवर्ड मिल गला, राइट? पेस्ट इट कंटिन्यू। सो एटी सजेस्ट करूची कोन इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन और सिलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। तो बेसिकली कौन हुए ना मु तुमको रियल टाइम में भी बतई दउची कंपनी माने करे कौन हुए ना से माने तम एति की मने रखि था तुमको डेफिनेटली क्वेश्चंस आसी पारे जेनकिंस रे, राइट? तमे तो फर्स्ट जेनकिंस इंस्टॉल करूछ तमे केमती करो तमे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन चूज करो ना मैनुअली प्लगइन चूज करो। तमे सब बेले कहबो मैनुअली चूज करो हला, कारण इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन केबे भी कोनी ऑर्गेनाइजेशन रे डायरेक्टली हमें जेनकिंस ऊपर छाड़ी दोंत तो सजेस्टेड प्लगइन टा इंस्टॉल करो। तो मैनुअली तम हिसाब रे जोटा दरकार तमे सेटा ही प्लगइन सिलेक्ट करिवो तापर इंस्टॉल करिवो। तो एठी कोन होची जेतो हमर ट्रेनिंग पई हमें यूज करूचे तो हमें चूज करि परिबा इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। ठीक अछि, क्लिक कली इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन। तो एई सब प्लगइन्स में तो सिलेक्ट इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन तो कोन ए जो बाकी ए सब प्लगइन ऑटोमेटिकली सजेशन जा सजेशन जेनकिंस दोगला से सब कोन होची वन आफ्टर अनदर एटी देखि पारतो इंस्टॉलेशन चली छी। तो इंस्टॉलेशन सरी गला पर हम तुमको बतई केमती कोन देखाओ। जस्ट ओके होल्ड ऑन फॉर फ्यू मिनट्स। जेहेतु एते सारा प्लगइन इंस्टॉल करूची, राइट? टिके टाइम नउची प्राय ऑलमोस्ट हे गला सब। ओके डन, एवरीथिंग all plugins are now installed। okay डन। तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन सरला पर प्लगइन कोन करियो तुमको फर्स्ट क्रिएट फास्ट एडमिन यूजर गोटे एडमिन यूजर आ आईडी क्रिएट पासवर्ड पई कहबो। तो यूजर नेम मु दे देली सपोज रंजीत फॉर गिटहब, सॉरी रंजीत फॉर जेनकिंस मु देली रंजीत फॉर जेनकिंस। पासवर्ड वो हिसाब रे मु पासवर्ड दे देली। ओके दे देली फुल नेम, ईमेल एड्रेस तमे दे दबो जेकोन ईमेल एड्रेस, सेव एंड कंटिन्यू। ओके तो एटा हला तमरे यूआरएल। एटा यूआरएल देखो ए पर्टिकुलर यूआरएल तम जेनकिंस यूआरएल जेतु वेब एप्लीकेशन, राइट? केवल ब्राउजर द्वारा तमे कनेक्ट करि परिबो। एटा हला यूआरएल तुम ऑलरेडी कनेक्ट करिछि तो एटा यूआरएल दउछि। देन सेव एंड फिनिश। रेडी नाउ जेनकिंस इज रेडी। तो हमें कोन करबा स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। So now we can see this is our Jenkins। now हमें Jenkins को कनेक्ट करि साला जैसे Jenkins टूल। तो एटा हमें बेसिकली फर्स्ट Jenkins ता गोटे इंस्टॉल करछे ता भीतर बहुत किछि जानिबार अछि Jenkins रे। तो मु यदि भी पुनी लॉग आउट करि कि लेट मी लॉग इन अगेन। तो एटा हला फास्ट जेतबे लॉग इन चला पर नेक्स्ट लॉग इन करियो, राइट? तो फर्स्ट लॉग इन पेज विल लुक लाइक दिस, राइट? तो तमे सिलेक्ट करियो जो यूजर आईडी देइतली तापर पासवर्ड। ओके हे गला कनेक्ट हे गला। तापर हमें को वर्जन जेनकिंस यूज करछ हमें 2.46 2.2 वर्जन जेनकिंस यूज होछ। ओके